Good morning, Jai Swaminarayan students. Today we start revision of unit number 1, Introduction to Cloud Technologies, Semester 8, CE Department, Session 2021, Subject name CIS. This is Dr. Vijay Gadvi. Let us start with the revision. Cloud computing. Main agendas are introduction, why cloud computing, example, what is cloud computing, architecture of cloud computing, types of cloud computing, key properties, advantage and disadvantage. Before we start, that's just introducing a cloud computing. Cloud computing क्या है वो हम समझ लेते हैं. Cloud computing is a on demand availability of कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज मीन्स क्या है इन कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्सेज, और सिंपली हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं, इज़ एनी फिजिकल और वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम. दैट मीन्स ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, एंड इंटरनल सिस्टम कंपोनेंट जिसे हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं. स्पेशली डेटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर without a direct active management by user. This term is generally used to describe a data center available to many users over the internet. Large cloud and predominant today often have a function distributed over multiple locations from central servers. Server क्या है? Server is a piece of computer hardware, software that provide a functionality for other program or devices. Is called as a client. Server में number of computer hardware and software सारे जो भी functionality है वो combined mode में होती है. This architecture is called as a client server model. Server can provide various functionality and services. Just example है sharing a data or resources. If the connection to the user is relatively close, it may be designated an edge server. Edge server क्या है? Edge server is used for content delivery network, content distribution network. आप CDN से जान सकते हैं, जो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो भी होता है, हम प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं, जो कनेक्टेड डेटा सर्वर में यूज़ होता है. मैन इसका गोल क्या है? द गोल इज़ टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. ओके, नाउ दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. इन क्लाउड कंप्यूटिंग we are considered a traditional computing, data stored on a single computer. Data can be deleted or damaged or lost. Then it is a PC centric. The document and file are located in single machine or small local area network. In PC centric cannot access from anywhere. जो फैसिलिटी हम क्लाउड में यूज़ कर रहे हैं वो PC centric में अवेलेबल नहीं है. देन एक क्वेश्चन हो रहा है हमें कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, इन विच डेटा रिकवरी इज़ पॉसिबल. It is important for data recovery. Authentication is possible. Less expensive, that means pay per use. आप जितने स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं इसका आपको पे करना है. अनवांटेड रिसोर्सेज के आप पे नहीं करना है, तो इट इज़ बेनिफिशियल. देन रिमोट एक्सेस इज पॉसिबल. रिमोटली आप एनी टाइम, एनी वेयर, एनी मूवमेंट, एनी प्लेस, यूनिवर्सली आप कहीं पे भी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर यूज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, विच इज़ अ क्लाउड connected with many clients, users. Then we can use the documents and file, the resource sharing, collaborate, communicate with each other, and scheduling. What is cloud computing? Definition already हमने डिस्कस की है, but once again, cloud is a large group of interconnected computers. It extends beyond a single computer or enterprise.
it is accessed via the internet. High speed internet connectivity is required. The architecture of cloud computing, you can see here, the individual user connect to the cloud seen as a single application device or document, and the hardware in the cloud is invisible. आपको पता नहीं होता कि क्लाउड आप यूज़ कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर वो कौन से डेटा सेंटर या वेयरहाउस पे आपके सर्वर्स है, बैकएंड सर्वर कहाँ पे है, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको पता नहीं होती है. दैट मीन्स द हार्डवेयर इन द क्लाउड इज़ इनविजिबल. मोस्टली टाइप ऑफ क्लाउड, public cloud and private cloud. Key properties, cloud computing is a user-centric, is a powerful, accessible, intelligent and programmable. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. सर्वर एंड क्लाउड. Microsoft Exchange server, in which you can communicate the cloud is a Microsoft Exchange Online. Then Office SharePoint server, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SQL Server, Active Directory and Windows Server 2008. Same, you can see the collaborations with the many business applications, storage, identity and platform in which you are use the same facilities among the cloud. This is a few example of how a client can manage, contact, work and share with use of many cloud applications. The few most used application is Google, eBlogger, YouTube, Picasa, Gmail. The advantage of cloud computing, which is a collaborators, in which the ability to share and edit document in real time between multiple users is one of the primary benefit of web-based applications. It makes collaborating each and even fun. There's Road Warrior, you can access a single version of your document from any location. Cost-conscious users, with cloud computing, you can save money on both your hardware and a software. अभी आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर्स mainly a public and hybrid clouds. Not that the cloud computing allows company to avoid or minimize upfront IT infrastructures. थोड़ा डीप में बता दूँ, IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रिसोर्सेज में हम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है. वो सारे एक्सपेंसेस आप अवॉइड कर सकते हैं. 100% यूसेज और रिसोर्स यूटिलाइजेशन आज तक कहीं पे हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं, ठीक है. तो हम पे एस पर फैसिलिटी, दैट मीन्स हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हम सर्विसेज यूज़ करें तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेटर रहेगा. इवन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल कंपनीज आर एडॉप्टेड क्लाउड नाउअडेज. दैट मीन्स क्लाउड हमारे लिए बेनिफिशियस है. दैट वाई we are use a cost conscious users, in which we are cover the cloud computing. You can save a money on both your hardware and software. In cloud providers typically use a pay as you go model, which can lead to unexpected operating expenses if administrators are not familiarized with cloud prices model. The availability of high capacity network, low cost computers and storage device, as well as the widespread adoption of hardware virtualization, service oriented architectures and autonomic and utility computing has led to growth in cloud computing. By 2019, the Linux was the most widely used operating system, including in Microsoft's offering, and is described as a dominant. तो ये जस्ट रिवीजन था. डिसएडवांटेज भी हमने रिपीट कर रहे हैं अभी. रिक्वायर अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ मैंडेटरी, does not work with slow connections. High speed internet connectivity is mandatory. Users has a limited access and does not get a freedom because
They depends on the cloud computing provider. The conclusion: a cloud computing provides supercomputing power. This cloud of computer extend beyond the single company or enterprise or organization. The application and data served by the cloud are available to broad group of users cross enterprise and cross platforms. थैंक यू. ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट एज अ यूनिट नंबर 1 in which we cover introduction to cloud computing, history, cloud service options, cloud deployment model, and business concern in the cloud. Totally weightage of this unit is a 10% from entire syllabus. Thank you. Jai Swaminarayan.